It is not about the number of endings, but about the number of beginnings you make in life. And DD Sports has just taken one such beginning, and the beginning is called, well, this is the Sports Conclave. My name is Padamjeet Sherawat, and I take it as a proud privilege to be here. I'm just not just alone, because that's what sport teaches you. Alone you can do so little. Together you can do so much. With me is former legend athlete Ashwani Nachappa. How are you feeling in the hot seat today? Well, it's really, really hot today, Padam. We have great champions out here, so we've got a lot of talking to do with them. So let's throw the questions back to them. So first, let me introduce the panel here. Obviously, we've got somebody who, in fact, इनको मैं देखता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तुमसे आके पूछे बता तेरी रज़ा क्या. Deepa Malik, how are you? I'm good, thank you. And what does this conclave mean to you? It means a lot. For me, the first term is inclusivity, that it is a recognition of para sports. It is very nice that I'm in this lineup. They are also very happy that they're with you. Yeah, we started. I mean, I started playing with them at the age of all India, I think, because you know, she's the legend that she get the first silver medal in a Paralympics. Oh, that's so sweet. That's a big thing. इनको जो बीच में अभी आ गए, इनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, because he is बीच में वैसे ही कूद जाता है. नहीं कूद, हाँ. इनका नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, पर इनके बारे में छोटी सी कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगा. मुझे जब मैं इनसे पहली बार मिला, इन्होंने मुझे जिंदगी का सीख दी. तो मैं हम एक शूट कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, तो इन्होंने मुझे कहा कि मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती. सॉफ्ट स्पोकन ऑफ द रिंग, capable of great carnage in the ring, Singh is King Vijender Singh. Thank you, bro. Thank you so much. I still remember what you taught me that day, brother. Thank you. ये भी मैंने बहुत सीखा है. I think like people like Gurdas Maan, people like Sachin Tendulkar, they are very humble, very down to earth. तो I think सीखने कोई उम्र नहीं होती, तो आप सीखिए. और विजेंद्र के साइड में वो बैठे हैं जिनके लिए आप एक सवाल तैयार करके The fastest drag flicker in the world, 145 kilometers per hour. I mean, we've got a lot of talking to do about how do you achieve such a feat and what it takes to become one of the world's fastest drag flicker. Easy नहीं है यहाँ तक पहुँचना, और basically hard work, जैसे विजेंद्र ने कहा कि हम्बल होकर ट्रेनिंग करो, हम्बल होकर आप कुछ भी काम करो तो आप एक अचीव कर सकते हो. तो मैंने अपना एक रास्ता चुना कि मैं एक हम्बल तरीके से और अपना मन को नीचे रखते हुए और अपनी इच्छाओं को ऊपर रखते हुए ट्रेनिंग करूं. तो आज मैं अगर वर्ल्ड का नंबर 1 ड्रैग फ्लिकर हूं तो उसी कारण से हूं. आप हमारे तीसरे गेस्ट हैं आज के दिन. जो चौथी गेस्ट है उनको मैं फिलहाल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं. सिर्फ छोटा सवाल आपसे पूछता हूं, सरलता के लिए, जो हॉकी खेलना चाहते हैं और आपकी तरह ड्रैग फ्लिकर बनना चाहते हैं, एक दिन में कितनी बार आपको ड्रैग फ्लिक एफर्ट लगा के गोल पोस्ट में मारनी पड़ेगी? स्टार्टिंग एज में मोर देन 100, लेकिन जब आप एक थोड़ा, मुझे लगा हजारों में बात करेंगे. नहीं, हजारों में आपके मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाएंगे. Well done, well said. You can't train next day, so better than you can start with 50 to 100. जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको जो एंगल्स हैं उसको परफेक्शन लाने के लिए स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना. और मैंने जिंदगी में ये सीखा है कि when life is in a mess, every man requires a woman when life is in a mess, because as in the game of chess, it is the queen that protects the king. And the queen is Tanya Sachdev. How are you doing? Thank you, very well. 8 साल की उम्र में इंटरनेशनल टाइटल आपने जीत लिया, तो आपको बर्थडे गिफ्ट के तौर पे भी चेस वेस मिलती थी क्या? Honestly, this time I think like any sports athlete, उस time आपको realize भी नहीं होता है that what you've done or what is your potential. At that time, it's your parents, your support system around you that pushes. So हाँ, chess board और pieces, Barbie dolls कभी नहीं मिली, thankfully. But lot of, I think my parents were very encouraging कि जाके बाहर खेलो. Whether it was chess or football. आप बाहर जाके भी चेस ही खेलते थे? बाहर जाके और चीजें करती थी. चेस का एडवांटेज था कि दिल्ली में गर्मी में I could be inside and work for hours, and I think it was not very common कि a 6-year-old or a 7-year-old could sit for many hours on the board. तो उन्हें लगा कि कुछ तो something's wrong with her. I think that's a very relevant question to ask further. Is you said your parents pushed you into it. I think for every Olympic dream or every success in sports, there's a lifetime of sacrifice and hard work. I'm sure today's parents would like to know your journey. Vijender could take it. I mean, for Deepa, it's a different story altogether. My but for children all push me three into of you, sports. yeah. And also, if I can just add to what Ashwani was saying, हम ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि पीछे विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने 3 साल से रोटी चावल को हाथ नहीं लगाया. वीरेंद्र सहवाग को मैं नजदीक से देखा, 2 साल उन्होंने कार्ब्स को हाथ नहीं लगाया. तो ऑन द वे थ्रू, जब आप अश्वनी की बात का जवाब दें, ये भी बताइए कि आपने जब इतना अचीव किया
तो आपने मिस क्या क्या, क्योंकि मैं एक दिन रोटी ना खाऊं तो मेरा तो बुरा लगता है। तो वी कैन स्टार्ट विद यू दीपा। Yeah, Deepa is the first, of course. Ladies आई first. थिंक मेरे लिए जब मैंने रियो को अपना एम बनाया और मुझे पैरालंपिक्स करना था, ऑफ कोर्स 2006 से मैंने 36 वर्ष में खेलना शुरू किया, जो अपने आप में ही बड़ी यूनिक सी चीज़ थी। जब मैं पहली बार इन्हें मिली थी कॉमनवेल्थ में, विजेंद्र को, संदीप को, तो मैं 40 इयर्स की एज में कॉमनवेल्थ खेलने आई थी और अपना जो ड्रीम था उसको मैं 46 इयर्स के, मैं एज को इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि वो वैसे आप आज भी 25-26 ओह आई लाइक यू। लेकिन मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ कि आपने डाइट की बात करी, जी। तो लोगों ने कहा कि ये कोई एज नहीं है विमेन के लिए, खासकर मसल डेवलपमेंट करने के लिए। इवेंट चेंज हुआ था, जैवलिन से शॉट पुट हो गया था, हैवी वेट इवेंट हो गया था और तैयारी का टाइम बहुत कम था मेरे पास, 11 महीने ही थे ओलंपिक में जाने के लिए। तो आई थिंक डाइट प्लेज अ मेजर रोल और फॉर द फर्स्ट टाइम, कैन यू बिलीव इट, इन माई लाइफ आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू माई डाइटिशियन डॉक्टर चिराग सेठी एंड दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि अच्छा मसल डेवलपमेंट के लिए डाइट को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। और फिर वही कहानी, कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कोई शुगर नहीं, तो आई थिंक ये सैक्रिफाइस तो हमें देना ही पड़ता है। एंड हाई प्रोटीन डाइट एक वुमेन के लिए एक दिन में बैठ के 8 अंडे खा लेना, मतलब Ma'am, you know what? एंड यू नो एज अ मदर और एज अ होम मेकर, और मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ मंगलवार को ये नहीं खाते, शनिवार को Ma'am, I also tried to lose weight once. Then I found it again in the refrigerator. नो बट मेरा इशू और था, मुझे तो बल्क गेन करना था, जी। यू नो विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ डाइट, क्योंकि मेरे को मसल बल्क को इंक्रीज करना था। और एक 46 इयर्स की मिड क्राइसिस के एज So में for आप वुमन every को बोल, sport there is Yes. difference. For Vijendra, I think with the weight that you are and which category you are fighting, how do you balance that? When I play my first match, that time my weight is like 42 kg, and I play like till 81. So it's a huge difference, right? And because I started in 2000 or like 99, so that was the age when I started, maybe 13 or 14 year old. And it's a long journey. I play so many weights, like fly, super fly, light, boxing के जितने ही Yes, मैच yes, almost सब finish कर दिए. But yeah, of course diet play a major role. पहले मालूम नहीं था, जब मैं गांव से निकला मेरे को नहीं मालूम था वो जो गांव में मिलता है, लाइक देसी खाना, घी, दूध और जो मिल जाए। तो ये बताइए लस्सी। विजेंद्र, माँ के हाथ की खीर खाए कितने दिन हो गया? बहुत दिन हो गया, क्यों याद दिलाया? The times have changed. Yeah, because- time has changed now, Because but, when we used to be in the camps way back in Yeah. early 80s, you know, our throwers would take liters of milk and put butter in it and drink, Yeah. because there was no But concept that, of a that's not good, I dietitian being think. on time. जो मैं मानता हूँ वो it's not a good or not a healthy thing कि you should put butter in milk or just drink हाँ. it. ये एक अलग तरह की डाइट है, बट अगर आपको weight put on करना है तो there is a different way you can follow it, right? So I'm saying that it's become more scientific. Now for hockey it would be different from what the boxers would take. For chess it's easy. I know Honestly, but it's a lot more forgiving. I mean, after hearing their stories, a diet for chess is a lot more forgiving. The only thing is what you advise everyone to eat healthy. Before a Yeah, game, yeah, you don't that's want to true. get drowsy, sleepy, so you don't eat so much rice. But it's to eat just moderate, healthy food. Tanya, what is the practice chart, exercise chart for a chess player? So it's really important. I think chess mein jo a lot of people miss out, because firstly chess is not a knockout sport. We have to play over 10 days, no matter how the tournament is going. आप हारे हैं या जीते हैं, आपको सारे 10 games खेलने हैं, and the score is counted at the end. Stamina is so important. Crucial. And for you to build on stamina, physical fitness, even though chess is a mind sport and it's a mental game, but unless आपकी body fit है, आपका mind work नहीं करेगा for those 10 days, 6 hours every day. It is not a 1.5 hour sport. It is something that takes 6 hours of complete concentration. आप sacrifice की बात कर रहे थे, and we went on to diet, but I think for chess में जैसे मैंने कहा कि it was not so much to do with food, but I think as an athlete at a young age, what probably everyone resonates with is the fact that you give up on a very, I don't know if I should call it give up, but it's not a normal childhood. You have to be ready to work really hard and be honest about your profession from a very young age. And you're young, Tanya, so how do you sustain? Like, we've all gone past that. For young children to sustain, because today the options are plenty. Television, you have it in your face, you have technology in your face. Children have so much options. So how do you sustain that interest in a particular sport? I think there is, in today's time, exactly what you said, there is
of course, opportunities are a lot more. There's a lot of positive that's come, but it's a distracted generation in general. I think when what kind of opportunity like you're talking about, like you know, if I'm doing any kind of sport, like I'm a boxer, and if I like find like cricket is interesting, right, and it's every time on the TV, I don't want to be like, okay, I don't want to be like part of this cricket. So whenever I think it's for a sports person, you should be like more focused on what sports, what you're doing right now. So how do you drive a child? Now you have a young son, so we can ask you, we've gone past that, Yeah, so yeah. I can ask you, how do you drive a young child with the education system that we have to pursue and remain in that I think you sport should to achieve ask that? him ki what his interest. Don't True. throw your decision on him ki like what you want to Absolutely. do, or like lots of people ask me like when he like traveled with me, oh he become a next boxer then. मैं कहा, तो why, अबीर why? अबीर किस खेल को ज्यादा पसंद करते हैं, क्रिकेट या बॉक्सिंग? अभी उसकी तरह एज हुई नहीं है किसी स्पोर्ट्स को लाइक करे. Just like 3.5 year old, Yeah. he just starts schooling and his mom is a software engineer, so she's saying कि like घर में एक boxer अच्छा है. I don't want to be like another boxer. But thing is that कि like it's totally on him कि he want to be a sports person. He want to be a, like some other thing he want to do. He can do that. I think don't be force anyone to do anything, right? उसकी मर्जी, उसका lifestyle. Just you just support him. That's it. Ashwani, were you critical of your kids? Did you force My them into it? daughter was a national badminton player Yeah, too, yeah. but the system, I'm saying, did not allow her to pursue the sport professionally. I mean, she's abroad now. एटमॉस्फेयर बहुत काउंट करता है इस चीज Because में. when she Yeah. reached the 10th grade, her principal in school told her that, now it's time you sit down for your studies, you can't play, you can't go for tournaments. So I'm saying the pressure is so high. It may not be from home, but the surrounding is such on an environment. It makes it Ma'am, difficult. Don't Focus, pressurize, ma'am. Don't take pressure. I don't think so, man. That will Focus, help I you. think, comes It's with easy passion. said विजेंद्र एक चीज let's be real होते हैं. No, विजेंद्र that's आप क्या true, कह रहे हैं? because I know, because I'm a father right now, and I don't take pressure or anything because it's his life. He got that school admission. It's not the question of Yeah. pressure, Vijendra, because a child is talented Yeah, and is interested. yeah, that's fine. I think Ashwani, it can also be the age till which you give them the liberty to just try and do whatever you can. 12, Yeah. 13, 14 years of age. But you like come to know when he what- will become like you're 10 or like 12-year-old, Yeah, then yeah. you get to know like what is his interest, right? Yeah. Like slowly you get to know like he's like to sports or he like to do study. हाँ वो 10-11 साल में पता चलेगा विजेंद्र बनना चाहते हैं, दीपा हाँ, अंतिल की तरह, हाँ. दीपा मलिक की तरह करना चाहते हैं, ड्राइव फ्लिकर बनना चाहते हैं, चेस प्लेयर बनना चाहते हैं. I But think let's it's very important that when they are young, not to enforce it, but to just introduce them to a plethora of options. Just let them go play, introduce them, Yeah. encourage them to get out and try out different. अच्छा एक छोटा सवाल यहाँ सबसे बनता है, छोटा बिफोर वी हेड इनटू अ ब्रेक. पिछले 10 साल में अगर आप देखें, खास तौर पे 3 साल की अगर बात कर लें, डू यू थिंक विजेंद्र आपसे शुरू करते हैं, टाइम बदल रहा है? पहले एक जमाना था माँ बाप कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो बदल गया है? जी ऑफ कोर्स बदल गया जी. मैं खुद मानता हूँ इसको बहुत बदल गया. जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो वी डोंट हैव एनी दैट अपॉर्चुनिटी जो है. अभी सिस्टम चेंज हो गया. अभी सोशल मीडिया बहुत हैवी हो गया है. यू कैन ट्वीट, यू कैन आस्क एनी हेल्प टू एनी स्पोर्ट्स पर्सन और एनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, राइट? आप किसी एक ट्वीट कीजिए, माइट बी ही विल गेट योर नोटिफिकेशन, मिल जाएगा उसको और आपकी हेल्प कर देगा. लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था. अभी चेंज हो गया है. अभी उस टाइम पे लाइक प्राइज मनी कितना लाइक 50 लाख मिलता था, अभी प्राइज मनी 5 करोड़ हो गया है. तो इट्स अ बिग डिफरेंस. Deepa, are we inching closer to becoming a sporting nation? I won't say. I think a good beginning is half done. Yeah, We yeah. have begun the Yeah. thought process. बात हो रही है, एक्शन हो रहा है, स्कीम्स बन रही हैं. एटलीस्ट इसका काम तो हो जिक्र शुरुआत हो चुकी है. क्योंकि आज से पहले मैंने तो नहीं सुना. मैं खुद 10 साल से खेल रही हूँ कि 2024 या 2020, मतलब इतना लंबा सोच और उसकी टास्क फोर्स बन जाना. टाइम लगेगा अभी उस तक पहुंचने और में. अगर मैं सिर्फ अपने पैरालंपिक स्पोर्ट्स के बारे में कहूँ तो इतनी इंक्लूसिविटी और इतना ज़्यादा सपोर्ट बाय वे ऑफ स्कीम्स आई थिंक इससे पहले नहीं आया है. हमारी तो फेडरेशन भी डिफंक्ट पड़ी थी जो ओलंपिक से पहले राव इंद्रजीत सिंह जी जो रूलिंग पार्टी एमपी हैं अभी. तो इट वाज वेरी नाइस दैट एन एक्टिव गवर्नमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट took personal interest and revived it. So kahin na kahin we can see that interest is So the being interest shown. is Yes. there, the intent is there. We've got Tanya, Talent we've is got Sandeep, there. we've got Vijendra, we've got Deepa, we've got Ashwani, and I'm Paramjit Sherawat. And it's time now to head into a quickie break. And on the way through, we've got a lovely story. Whose story do we have? This is Malti Hola's story. On the way through, I would love to say कि
खेलते रहिए, खेलो इंडिया। चाय ब्रेक और टी ब्रेक से very much left alone, like fish out of water, you say, like that. Then I told my daddy that I'm not going to the college because all are normal, and from class to class you'll have time to move yourself. By the time my lesson used to be started, then I told my daddy I'm not going, I want to discontinue my studies, I don't want. That time he encouraged me, this is the right time, you should take up your life as a challenge, because all these years you were among the disabled in your own world. This is the other world, you should come out of your shell and face the world. In 1975, when I came to Bangalore, accidentally there was a national meet at Bangalore. There I represented Tamil Nadu because I was not, just then I came here, no? Then I bagged 2 gold and 2 silver in wheelchair race, shot put and javelin. Then we had a third national sports at Ahmedabad. We went there, unfortunately there was not even a single lady participant with me. Then I was asked either to withdraw or to compete with men. Then I didn't want to come back with my empty hands because I want to impress my employers, because I was representing for the first time my bank. Then I blindly told them that I will compete with men. So no courage or anything. Then of course I was shivering inside. Then when the meet started, I don't know what happened to me. I just closed my eyes and pushed my wheelchair. Then everyone was shouting with joy. When I opened my eyes, I was number 1. That was the unforgettable moment in my life, I think. When I am in the sports field, I forget everything except my event. I only concentrate about my event and about my competitors as well. That's all. And I only think that I should win it. Now I don't have the complex at all that I am handicapped. Physically I may be, but mentally I am not. And I have the willpower, why can't I live like others? And though whatever I don't have strength in my legs, I have it in my heart as a willpower. So why can't I do something and show others? Well, life and sport teach you one thing. It is not what you have, but what you do with what you have. जज्बा है, हौसला है, उड़ान होगी. Right? Absolutely. I mean, Malti is somebody, I have seen her train from my days of training. She used to come to the track in 75 when we also just started running at that point in time. The kind of work that goes behind every para athlete is no comparison to what we all did. Because there's enormous amount at that point in time, the sensitivity was also not there. It's not just about the training, but about the facilities which were not available to them. And Malti is one inspiring lady, is because she has come back to give the sport, she has come back to help. She's a mother of 23 kids now, Yes. of such disabilities, and I'm really proud to be part of her foundation. It hasn't been an easy road even to achieve what she's won, about 400 odd medals for the country. And yet we really don't recognize para athletes to the level of any other athletes, though in Olympic Games we've won more medals than the abled body. So what do you have to say about that? I think these Paralympics, the recent ones, has really brought in a lot of awareness and a wave of change. बहुत बदलाव आया है, recognition आया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी हो ही जाती है एबल बॉडीड या पैरालंपिक स्पोर्ट्स को. और आई थिंक इसमें स्कूल लेवल पे ही अगर अवेयरनेस दिखाई जाए, मुझे लगता है कि अगर स्कूल के बच्चों को पैरालंपिक स्पोर्ट्स से इंट्रोड्यूस कराया जाए, या जब भी जहाँ भी ये गेम्स होते हैं हमारे स्टैंड्स खाली होते हैं, तो अगर इससे ज़्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और कहाँ मिलेगी, जब आप देखते हैं कि लोग अपनी डिसेबिलिटी से ऊपर उठकर
एंड कंपटीशन इज वेरी टफ. मेरे ख्याल से जैसी ट्रेनिंग की बात आज विजेंद्र या संदीप तान्या करेंगे, उतने ही लेवल की ट्रेनिंग हम लोगों को भी करनी पड़ती है. इंटरनेशनली इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन नाउ, एंड वैसी ही डाइट, वैसी ही ट्रेनिंग, वैसी ही जिम, वैसी ही क्रॉस But ट्रेनिंग. is there an Indian environment to support that? हाँ, Because for you, so- you need a great support system around you to help you I function think that yes. way. अभी तक till the time we were introduced to target Olympic podium scheme, I think it has been a very individual journey. अपने आप ही आप स्पॉन्सरशिप गैदर कर लीजिए, अपने ही एटमॉस्फेयर में आप उसको ट्रेनिंग कर लीजिए. ट्रेनिंग कैंप्स भी लगते हैं, तो भी उसमें जैसे मेरी जैसी सिवियर डिसेबिलिटी में ऑल राउंड सपोर्ट नहीं है. मुझे कैथेटराइजेशन के लिए नर्स चाहिए, जिम करते हुए मुझे 4 लोग पकड़ने वाले चाहिए क्योंकि मेरे टॉर्सो बैलेंस ही नहीं है. गलत एंगल पे वेट उठा लिया तो आई कैन गो इनटू एन इंजरी. सो लेडी हेल्प भी चाहिए, जेंट हेल्प भी चाहिए, एक ऐसा कोच चाहिए जो आपकी मेडिकल कंडीशन से भी उतना ही वाकिफ हो. लॉट ऑफ साइंसेस अराउंड दिस, एंड डिसेबिलिटी ट्रेनिंग इज इवन मोर टफर. So let's ask Sandeep about the knowledge of sport, the science of each sport. And also, Ashwini, there was an accident that he went through. Yes. He could not move for 2 years. Yeah. I mean, for a champion player. So how did you wheelchair पे recover था, from almost such 2 a years. terrible injury? I was on wheelchair for 2 years. मेरे को पैरालाइज हुआ. So वो 2 साल तो हमारे साथ खेल के चले जाते हैं. I can imagine Continue वो रहना. टाइम जो है वो कैसे, बिकॉज आपको एक टॉप लेवल पर एथलीट बनना है और आपको उस पोजीशन से ऊपर आना है जो आप एक मतलब आप अपनी टांगों को मूव नहीं कर पा रहे हैं और आप बेड पर हैं और आपको बेड सोल हो रहा है और आपको डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि यू कांट मूव, आप खेल नहीं सकते, आप चल नहीं सकते. तो उसके बाहर निकलकर आपको ट्रेनिंग करना है और वापस फील्ड पे आना है. और फील्ड पे ऐसे आना है, आप देखें अगर एक हॉकी मैच में मोर देन 17 किलोमीटर रन होता है और अगर आप 10 दिन में 6 मैच खेलते हैं तो कितने किलोमीटर रन करते हैं और उसकी रिकवरी कितनी है. डाइट की बात की तो डाइट क्या खाना चाहिए वो मतलब पूरा काउंट होता है. तो उससे बाहर निकलकर आपको ट्रेनिंग करना है, उसके लिए बहुत आपको मेंटली फोकस होना पड़ेगा. जी हाँ, और सब लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम यू संदीप इज के उतार चढ़ाव खेल में आएंगे, मगर अगर आप इट्स फेलियर इज नॉट समबडी फॉल्स, फेलियर समबडी हु डज नॉट राइज आफ्टर फॉलिंग. तो वो बहुत जरूरी है. एंड No, खास I करके think that mental toughness, how you build on that mental toughness, is there in our Indian camps. Do people really do mental training? Hockey has progressed over the years. Nowadays It's purely mind over matter. So how do you? फिजिकली एंड मेंटली पूरा टफ अभी गेम जो है हॉकी है. पहले होता था कि आपको सिर्फ स्किल चाहिए जी. और आपको फिजिकल भी उतना नहीं था. अभी फिजिकल, मेंटल और स्किल तीनों और चीजें आपकी combination है. कॉम्बिनेशन होगा तभी आप टॉप लेवल के टीम के साथ मैच खेल सकते हैं. सो अभी चल रहा है जो इंडियन हॉकी टीम में कि अभी पिछले 2-3 साल से मेंटल ट्रेनिंग हो रही है. लेकिन पहले टाइम में मेंटल ट्रेनिंग नहीं होती थी. फिजिकल फिटनेस जो होती थी, जो अगर हम बात करें पिछले 6-7 साल पहले जो होता था उसमें लास्ट मिनट में जो इंडियन हॉकी टीम गोल खाती थी, फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, नॉट अबाउट द स्किल. Yeah, because always we see the hockey match in the last 5 minutes of the game, the Yes. game changes and everybody says, what is it that we lack in that last 5 to 8 minutes? And I think we see that change एक्चुअली slowly मैं coming back. जस्ट अभी रियो ओलंपिक्स में वी कंसीड लास्ट 3 सेकंड्स seconds, अगेंस्ट जर्मनी. सो वो उसमें क्या है कि हमारे प्लेयरों को हो जाता है कि हम बस लास्ट मिनट है तो अभी हमारा खत्म है काम, इसके बाद वी फिनिश. लेकिन जर्मन्स जैसी कंट्री जो है मेंटल टफनेस, दे आर रियली मेंटल टफनेस. वो फिजिकली और मेंटल सेम लेवल की ट्रेनिंग करते हैं. सो हमारे इंडिया में फिजिकल और मेंटल दोनों की ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा जरूरी है. विजेंद्र, आप यू टर्न्ड अ प्रो नाउ, तो संदीप ने जो बिल्कुल कहा, जस्ट पिक अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर एंड आस्क यू. आप एक बड़ी बाउट के लिए जा रहे हैं. उससे पहले की प्रेपरेशन क्या होती है विजेंद्र सिंह की? 6 घंटे पहले कैसे तैयार करते हैं अपने आप को? 6 घंटे पहले? हाँ नहीं, जो प्रिपरेशन है वो तो बहुत लंबी चलती है, बट जो लास्ट के 6 आवर्स हैं, आई थिंक डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग मैच, लाइक 10 राउंड आपको खेलना उस फाइट में. तो यू शुड बी टेक लॉट्स ऑफ लिक्विड एंड द प्रॉपर हेल्दी मील, आई थिंक, एंड यू शुड बी लाइक फोकस कि हाँ, बिकॉज उससे पहले यू गॉट सो मेनी कॉल्स कि हाँ यार आज ये कर देना, आज वो कर देना, ये कर, तो बहुत चीजें होती है, लेकिन यू शुड बी लाइक मोर फोकस. साइलेंट पे होता है या ऑफ? फोन बंद होता है मेरा. आई जस्ट एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर बिग फाइट. No, but I think that mental ability for Tanya would be much more to sustain that for 10 days at a row. So how do you actually practice the mental training?
before a game? For me, it's part of the skill involved in the sport, the mental training. But all that given, I've been playing for over 20 years now. A loss is still as hard. It's not so easy to get over it, and I still struggle with it. Losing a game still means a sleepless night for me. As far as training before the game is concerned, I think, like Vijender was saying, it's months and months of practice. On the day of the game, at least as far as chess is concerned, rest and appearing absolutely fresh for the round is the best kind of training that you can do for any sport, especially chess, I would say. Mental training is something that takes years. I feel it's easier as in just relatively to kind of train your body to a physical fitness level, but to control your mind and have nerves and understand that a sport is not over till it's over, like the example that Sandeep was giving. You know, in the last minute, anything can happen. To have complete concentration and give it your all for that entire phase is something that takes years of practice. Yeah, as they always say, because success lies in your daily routine. Yeah, because what you do every day is where success lies from. You know, we've got a lot to chat to our guests. And my silver was also won on the last throw. Yeah. So We'll come back and chat about it. For the moment, we'll just go into a quick break, and the break is actually a beautiful story about Manoj Ingle, and enjoy the story. We'll come back and have more from our guests. In the year 1984, I participated in Maharashtra for Junior National Boxing Championship at Jamshedpur. There I won bronze medal, but in all three tournaments I played very well. So that they selected me for National Boxing Camp for Junior Asian Boxing Championship. Even in Junior Asian Boxing Championship, I won gold medal over there, and from there my boxing career starts. In the year 1988, I played Senior National Boxing Championship at Bangalore. There I won more than 5 tournaments and beat even services boxer, and I got the best boxer award of that tournament. After that, I played for India in Senior Boxing Championship also. In the international boxing, first I played Asian Games 1986 at Seoul. There I fought with world champion Korean boxer, and I played very well, and I got but I lose just by 1 point only. I'm really very much interested to start coaching, because actually even after retiring, that time I was very much fit to fight in international tournament. For my career, I left the boxing and start my own business, and that's why I'm not what I did in boxing, and what I want to do, which I couldn't do, that I want to make it from other boys by teaching new boxers and take them to international boxing. What a beautiful story that is, and who better to take that story and throw it to than India's best boxer we've ever had, Vijender Singh. Singh is king. Vijender, a lot of people think that it's all about agility and force and punch and hook and bob and weave, but you also need to think like a Tanya Saste, like a chess player. Of course, it's totally mind game, because you know, when you play for like 10 or 12 round, you should be like, there's a like number like 10 round fight, so you should be win like 6 round, that's it. 4 haar bhi gaye to like who cares, you win the match. So it's all about to win, right? Anyhow, you just take the win. मतलब जब आप बॉक्सिंग करने जाओ तो ईगो कमरे में छोड़ के जाओ. हाँ, ईगो छोड़ के जाओ भैया, दिमाग it's all mind game. वो कर क्या रहा है, उसकी गलती क्या है, मिस्टेक क्या है, then you just take the right chance and then उसके ऊपर ठोक दो. Actually, there's a sport in the US called chess boxing, where they've got 2 minutes of a chess game, and then the players go do 2 minutes of a boxing just to release their No, it's also so interesting because these two sports you would think are complete end of like opposite ends of the spectrum. Like But chess there's is so like a much mind game, strategy right? You should be involved. like fight with the mind, right? And boxing is all about like people think like it's a very violent sport and it's dimag ka koi kaam nahi hota. Yeah. But it's not like that. Strategy involved there. How did you transit from being an amateur
to a professional? What made you change? क्योंकि लोग तो आपसे गोल्ड की become a उम्मीद रख रहे थे professional. ओलंपिक्स में, आप प्रो बन गए। अभी सर मैं कहते हैं कि 50 साल तक थोड़ी खेलता रहूंगा। अभी बच्चे आ गए तब वो बच्चे बोलते हैं ला भैया छोड़ दब तो बहुत हो गया, हमें हमारे को चांस मिल जाएगा। तब उनको चांस दे दिया, अभी मैं प्रो में आ गया अभी, राइट। एंड इस बात के ऊपर तो बहुत फाइट होती है मेरी, लाइक जब मैं फ्लाई करता हूँ कहीं भी, लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आस्क मी लाइक व्हाई यू टर्निंग प्रो, यू आर गुड इन एमेच्योर। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम क्या है ये बताना। यू लाइक माइक टायसन, यू लाइक मोहम्मद अली, यू लाइक मनी पाकिया, यू लाइक फ्लोइड मेवेदर। जब ऐसा ही कोई लाइक मेरे जैसा कोई करना चाहता है, वैसा बनना चाहता है कि लाइक मोहम्मद अली, लाइक माइक टायसन, तब आप उसकी क्या कहते हैं टांग पीछे की तो नहीं यार क्यों जा रहा दुआ, इट्स नॉट गुड। पर ये बताइए, ये जो आपके मूव्स थे पंच और ये आपके, ये रॉकी बल्बोआ फिल्म देखी थी आपने सिल्वेस्टर स्टैलोन की? मैं बहुत बार देख चुका हूं, मेरे को बहुत मैं बहुत बार देख चुका हूं। उसके बाद तो बहुत सारी मूवी आ चुकी है अब तो। अभी तो एक दो और मूवी है। अच्छा, विजेंद्र सिंह पे अगर कोई आपकी बायोपिक बने तो आप किसको चाहेंगे, कौन प्ले करे आपका, विजेंद्र सिंह को कौन प्ले करे? अभी तो खुद ही कर लेगा। नहीं अभी मैं नाइस कि मैं खुद अपना प्ले अभी तो करूंगा। यंग है। इन्होंने फुगली कर ली है, दोबारा करेंगे? नहीं मैं खुश हूं मैं यार, मैं वो मूवी अच्छा बताइए किसको चाहेंगे, कौन प्ले करे? अभी तो देखिए अभी मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई बायोपिक बने, बिकॉज मैं मानता हूँ हाँ बहुत सारी चीजें बाकी हैं अभी लाइफ में करना, एंड दिस इज नॉट द एंड। जब मैं कहता रिटायर हो गया, जब बैठ जाऊंगा आराम से कि भाई हाँ नाउ द टाइम, तो तब मैं चाहूंगा कि, लेकिन अभी राइट नाउ ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है कि मैं किसी एक्टर का नाम लूं। अश्वनी, तो यही संदीप से पूछ लेते हैं कि आप पे बायोपिक बनेगी, कौन प्ले करे? देखिए अभी विल गिव यू रियली बिग न्यूज वेरी सून। अरे वाह, सुनिए, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि देखिए पहली पहल की कॉन्क्लेव है, स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव। लेडीज एंड जेंटलमैन, संदीप सिंह अनाउंसिंग समथिंग, अनाउंस कीजिए। अनाउंस की बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली चित्रांगदा के पास मेरे राइट्स हैं, चित्रांगदा सिंह जी, and she will doing now producing my movie with Sony Pictures. So ताली हो जाए, ताली हो जाए। so दोनों ही मिलकर मूवी, देखिए आपकी मूवी की मार्केटिंग कर दी हमने। so बाकी You are playing the lead role, or you have somebody else? है वो भी अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी उसका मैं यहाँ पर राज को राज ही रहने थोड़ा एक्टिंग स्किल्स सीख रहे हैं। so definitely एक्चुअली हमारा जो मेन मोटो है नेवर गिव अप, That's right. तो जो हमारा स्लोगन है इस मूवी का, तो डेफिनेटली जो मेरी लाइफ की जर्नी है, जो एक स्पोर्ट्स पर्सन की जर्नी है, एक बहुत से बिलो मिडिल क्लास से निकलकर एक ऐसे लेवल पर पहुंचना, उसके बाद फिर एक ऐसी चोट का सामना करना जिससे कि मेरी पूरी फैमिली ने फेस किया, देन उसके बाद उठकर दोबारा फील्ड पर आना और इंडिया के लिए खेलना और इंडिया को मेडल जिताने, और साथ ही दूसरे जो प्लेयर्स हैं, साथी प्लेयर्स हैं, उनको एक ऐसा लेवल पर बताना कि हाँ हॉकी जो है सुल्तान अजलान शाह कप जितवाना, जो आपने जितवाया है ना, और इंजरी के बाद 2 मिनट रह गए हमारे पास शो में। हाँ, तो तान्या, just 30 seconds, what will be your message to the budding chess players? Honestly, to any kid who takes up any sport, I would say go try out all sports and see what you enjoy the most. And if you enjoy chess, be honest about the hard work you put in. Love the game, enjoy the game. Only do it if you enjoy it, because sports it can be very tough and brutal, but the outcome is brilliant, and what it can give you, nothing else compares. Sandeep, your turn. देखिए मेरे हिसाब से जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स है, वो दिल से खेलनी चाहिए, और जब आदमी गेम करता है तो उसको बाकी चीजें भूल जानी चाहिए। जैसे विजेंद्र पाजी ने कहा कि मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाता, तो सिमिलर उनको वो चीजें जो अपने हमारे को डिस्टर्ब करती हैं, उस चीज को भूलकर फोकस स्पोर्ट्स में करना चाहिए। तो डेफिनेटली स्पोर्ट एक्चुअली इज लाइक फोटोग्राफी, इफ यू डोंट फोकस देन ओनली थिंग यू आर लेफ्ट विद इज नेगेटिव। तो विजेंद्र होना कितना आसान है, ये बता दीजिए। आसान है, ओके। I don't know, man. But thing is that like you should do your hard work. That's it. Because there is no shortcut in your life. Because मैं खुद अपनी it's like almost 15 years I'm doing my boxing thing. But there is no shortcut. Just believe in hard work. That's it. Hard work. Deepa Malik, final comments on our show. I think मेरा मैसेज यही रहेगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। नहीं, आपको एक इंसिडेंट छोटा बताता हूँ। आपने और मैंने, याद है विजेंद्र भी थे वहां पे, स्वर्ण जयंती पे मैं फिनाले परफॉर्मर था। आप जब आई थी और विजेंद्र के बाद आप आई थी, मैं वहां गा रहा था, आपने मुझे गाना दिया, मैं बैक स्टेज गया और आपने मुझे गाने का मुखड़ा दिया। उस गाने के बोल थे,
आपको देख के मैं इंस्पायर हो हुआ जाए था। पाजी एक। और वो ये था, ये गगन छोटा पड़ जाए तेरी उड़ान ऐसी हो, ये चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो, सबसे जुदा Very सबसे अलग तेरी पहचान हो। तो आपने वो गाना मुझे दिया था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you so Very much. nice. Thank you for being on Ashwini, the show. and we truly loved it. And That's time now right. to go to Guwahati, because it's not just Delhi which is buzzing with all the energy about the sports conclave. Time now to go over to Guwahati. This is DD Sports headquarter in Delhi. You are watching DD Sports Conclave 2017.